बेंगलुरु में अल-अमीन डिग्री कॉलेज का 58वां सालाना जलसा 58th एनुअल डे कुदरत के साये में तालीम के आंगन में बेंगलुरु की शान लालबाग के दामन में इल्म हुनर की रोशनी हासिल करते हुए अल-अमीन कैंपस से एक और बैच डिग्री याफ्ता हो रही है। इस साल 200 से ज्यादा नौजवान अल-अमीन से ग्रेजुएट और मास्टर ग्रेजुएट बन रहे हैं। आर्ट्स साइंस कॉमर्स के शोबे से बीए बीकॉम बीएससी एमएससी एमकॉम की डिग्रियां मुकम्मल करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन तमाम स्टूडेंट्स के एजाज में अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने शानदार पैमाने पर ग्रेजुएशन डे का इनाकात किया। आज बतारीख 28 जुलाई 2026 बरोज मंगल एनुअल डे और ग्रेजुएशन सेरेमनी मुनअक़द हुई। इस मौके पर अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान, सेक्रेटरी जुबैर अनवर, ज्वाइंट सेक्रेटरी यमजेद अली, ईसी मेंबर्स कमाल पाशा, बिलाल अहमद खान, प्रिंसिपल अमजद पाशा, वाइस प्रिंसिपल उमर फारूक व दीगर जलवा अफरोज थे। इम्तिहानात में स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज में अचीवमेंट्स हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने इनामात व सर्टिफिकेट से नवाजा। बहरहाल अल-अमीन के इस खूबसूरत कैंपस से डिग्री होल्डर बन रहे इन नौजवानों ने कहा कि उन्हें यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल करने का मौका मिला। पढ़ाई, स्पोर्ट्स, कल्चर, हर फील्ड में मैनेजमेंट और टीचरों ने भरपूर साथ दिया, भरपूर हौसला अफजाई और रहनुमाई की। चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने अपने सदारती खिताब में तलबा व तालिबात की आइंदा की जिंदगी के लिए काफ़ी कीमती बातें कहीं। बुलंद हौसलों, बुलंद अज़ाइम के साथ मुस्तकबिल का सामना करने की उमर इस्माइल खान ने नसीहत की। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के वेरी यंग नौजवान ईसी मेंबर और चेयरमैन उमर इस्माइल खान के फर्जंद बिलाल अहमद खान ने भी स्टेज के जरिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, अपनी स्पीच के जरिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। तो दोस्तों, अल-अमीन के तालीमी गलियारों से 58th एनुअल डे प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। It is not merely a ceremony of robes and degrees. It is a celebration of perseverance over uncertainty, curiosity over complacency, and dreams transformed into achievements. It is my immense pleasure to welcome our esteemed dignitaries, respected members of the management, distinguished faculty, beloved parents, and our graduating students to this momentous occasion. As philosopher Socrates observed, education is a kindling of a flame, not the filling of a vessel. We celebrate those flames that have been ignited within every graduate seated here. Every noble endeavor acquires a deep meaning when it begins with the remembrance of the Almighty. To sanctify this occasion with the divine blessings and to commence our program with the من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى صدق الله العظيم
ये जो आयत पढ़ी गई है, ये जो है इसमें एक बहुत बेहतरीन दुआ, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी थी कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जाके फ़िरौन को दावत दो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, मेरे सीने को कुशादा कर दीजिए, मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दीजिए, मेरी ज़बान में जो लुकनत है उसको हटा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे, तो ये दुआ जो है बहुत ज़रूरी है। हमें भी चाहिए कि अगर हमारे इल्म में इजाफ़ा हो, हमारे जो है बोलने में ताकत हो, तो ये दुआ का अहतमाम करें। अस्सलामु अलैकुम। The quote, coming together is the beginning, keeping together is the progress, and working together is the success. Respected Chief Guest, Honorable Members of the Management, Honorable Chairman Sir, distinguished members of the Governing Council, esteemed faculty, dear parents, graduating students, invited guests, ladies and gentlemen, a warm welcome and a good morning to one and all here. It gives me immense pleasure and profound pride to welcome you all to our graduation day celebration in Al-Amin campus. This is one of the most significant occasions in the academic year in our institution as we gather to celebrate the achievements of our graduating students and honor their years of dedication, perseverance, and their hard work. On behalf of entire college fraternity, I extend my warm welcome and a cordial welcome to our distinguished chief guest, Mr. Rizwan Rashid, who is on the way, and he is held up with some important work. He may join us later. We are truly honored to welcome our chairman, sir, who is the president of today's event. Sir is an excellent example for the greater achievement and carrying the legacy of education which has been come from our founder, sir, Dr. Mumtaz Ahmad, sir, who has sowed the seeds of education excellence for the community and for the society at the large. I welcome you, sir, on the behalf of whole fraternity of Al-Amin Arts, Science and Commerce College. I request Umar Farooq, sir, Vice Principal, sir, to honor and welcome our chairman, sir, with a flower bouquet. Our honorable conducted third international conference on advances in material sciences and technology on from 24th to 26th July 2025. NSS volunteers who are always on the toes for the social development from the students of BA and BSc and BCom has participated in Gandhi March rally organized by the Department of Collegiate Education on 1st August 2025. The NSS unit also conducted health checkup camps in the campus regularly with a blood donation camp too. Organized a special 7 days social organized event, that is NSS camp at Shivnapura near Hoskote from 9th to 14th May 2026 and has got a huge round of success and also appreciation from the villages across. National Pulse Polio Immunization Program was organized in the campus and our students have participated wholeheartedly, creating awareness about the health awareness. And Swachhata Hi Seva Hai. Under this motto, the NSS team has organized the Seva at the Gokarna Beach near Mangalore on 31st March 2026. Al-Amin Educational Society has organized a spiritual awareness session addressed by Maulana Muhammad Shafiuddin Nadwi Sahib and also Mufti Sheikh Imran Ahmad Sahib on 4th August 2025, and Dr. Shama Begum of Department of PG Commerce have been awarded doctorate from Bharatiyar University. That was a greater achievement from our faculty. BCom students have completed their orientation and also training session from Reliance Foundation and also Infosys sponsored CSR online program from 12th August for a week to get acquainted with their happenings and changes in their academic learnings. Independence Day was celebrated on 15th August in the graduates, to all the students and the parents.
all of your parents have worked very hard to send you to this college, and you have worked very hard for the past 3 years to reach this stage. So congratulations to both your parents and you. There are far more better people who can give you better advice with more experience. But with someone who's closer to your age, I was not too far ago from where you're sitting. And I will share what helped me and what I find important. And hopefully that you can take something from it and it helps you too. There are three things that are important, that I find are important in any stage of life. The first thing, and probably the most important and the hardest thing to do, is find your purpose, is to find something you're very good at. Now, I truly believe that every person has a destiny, a path that is already laid out for them. And you get these signals from God that guide you to your path. And when you actually follow this path, you ultimately reach your purpose. Now, there are multiple ways of finding a purpose. I will get into that in a minute. But the reason I suggest that all of you all find a purpose is it's something that drives you. It gives direction to your life. It gives meaning to your life. And there are multiple ways of finding a purpose. The most easiest way is to find something you're very good at and become great at it. That's the easiest way of finding a purpose. Something that you're naturally, inherently good at. It can be, if you're very good at numbers, you'll be a great accountant, or you can join finance. If you're good at, if you're a compassionate person, you'll work great with HR. If you're very creative, naturally, you'll be great at marketing, right? So find something that you're inherently good at and pursue it. The second way of finding a purpose is very early on in your career, try on different things. Try on different fields. The thing is, once you graduate, when you're 21, 22 years old, you have lesser responsibility than you ever will. Now soon, all of you all will get married, you'll have children, and later on you'll have so much more pressure, so much more responsibility. It is very hard at that stage in life to experiment. So very early on in your careers, try on different fields, try on whatever you think you may like, and find what you're good at. The next important thing that I want to go to is it's very, very important as a 21-year-old, 22-year-old to work very, very hard. It's extremely important that you work harder than most people. Now, there's a time where you work hard and there's a time where you work smart. And I'll give you the difference also. But work hard early on in your career because there's nothing else to do. When you are early on in your career, when you're just out of college, you have no experience. You might have a job, but no experience at all, no expertise in anything. So when you join a company, when you find your purpose and you like what you do, work very, very hard. And in a couple of years, this is what will happen. You will become an expert at what you're doing, which in the corporate world we call it subject matter expertise. The second thing, you create a work ethic for yourself. After working hard for many years, what you develop is a work ethic, which is far more important than anything else. And thirdly, you become competent. You become competent in the field that you're working in. So when you get all of these three things, once you get a work ethic, you have experience and you're expert in something, that is when you work smart. You work smart in the sense you question the processes, you question the procedures, you question the systems and bring on improvements. And lastly, the most important is have faith. Have faith in God, have faith in yourself, that the amount of hard work that you put in, the sacrifices that you're making, all of that will amount to something. Ultimately, it might take you a week more or a month more or a year more or a decade more. Just have faith that it will amount to something. Your hard work will pay off. And a lot of people give up very fast. They give up after a week, after a month, after a year. But when you continuously work hard for an extended period of time, there's never an instance for someone who works very hard and fail in life. The more you work, the more failures you tackle, the more experience you get, that is the pathway to success. Now, these three things are very important to me. That's why I thought I'll share it with you as well. And if I just want to end with this, I'll give you a life hack.
It helps me a lot. I hope it helps you too. In a world where there is so much abundance of knowledge, there's so much information so readily available, the most authentic, the most accurate information that you can get is from books. Read books. It changes your perspective. It changes your mindset. Not only fiction, but study entrepreneurs, study founders, study presidents, study people who are great in whatever field they're in. Once you get that, you understand the mindset. You understand that, okay, your life may be hard, but they have harder lives and they've overcome it. So if they can, you can too. Right? So yeah, with that, thank you everyone. Congratulations to each and every one of you. Wish all the very best. The gates of Al-Amin are always open, as you can see. They're always open for people who want any sort of guidance, any sort of help. We are always here to help you. So if you guys ever require anything, please don't feel shy. Thank you very much. President, Student Council, standing here to deliver my graduation speech. It feels like yesterday I walked through these doors as a first-year student. Back then I was just a self-proclaimed nerd, focusing entirely on books, learning the ropes, and step by step taking the role of a class representative. That initial step taught me that leadership isn't about holding a title. It's about serving community around you. By my second year, that realization grew into serving as Vice President of Student Council, where I was balancing between leadership and my academics, where late nights paid off when I secured 100 out of 100 in business statistics. It proved that passion and discipline can truly coexist. Then my final year journey became a transformative chapter where I was into deep research and broader horizons. Serving as President of Student Council has been the greatest honor of my college life, allowing me to represent an extraordinary student body. I have written 6 research articles. Among 4 are the best paper awardees, with one as UGC approved publication recognized by Government of India, and securing 100 out of 100 in Income Tax 1. This journey would have not been possible without the support of our principal, Chairman Sir, EC member Mr. Bilal Ahmed Khan, Student Council coordinators Mrs. Tasneem Sultana, Mrs. Tasneem Amina, Mr. Syed Bilal, and my parents. My special gratitude to the IQSC and R&D cell, Professor Shakira Khanum, Dr. Shama Begum, Mr. Dhanush, fostering an environment where research excellence and innovation could thrive. Last but not the least, I would like to thank the student committees, Cultural Committee, Mrs. Nikhat Nazir, Mrs. Saida Nusrat, Mr. Nayaz Ahmed Sir, for their encouragement through every high and low for making these 3 years unforgettable one. Thank you. Standing here today is very emotional moment for me. It's very hard to believe that I spent 5 years of my life in Al-Amin College pursuing my journey in microbiology. This college has been a very important part of my life, and over 5 years I've not only grown as a student but also as a person. This place has given me knowledge, friendship, memories, experiences, and countless moments that I'll cherish forever in my life. From the day I joined this college to where I'm standing today, this journey has been very truly special. I'd also like to sincerely thank Al-Amin Institute, all our respected teachers, non-teaching staffs, our attenders, and everyone who have contributed to making this institution a memorable part of our lives. As I look back at these 5 years, I realize I'm not only completing my education, but I'm closing a beautiful chapter of my life. I would like to express my heartfelt gratitude to my HOD, Mr. Farooq Sir. Thank you, sir, for always supporting, encouraging, and always guiding us at every step of our life. Your constant motivation, kindness, and willingness to help us have made a very great difference in our journey. You have always encouraged us to do better and believed in us, and for that I'll always be truly grateful.
Al-Amin College will always remain a special part of my journey, and memories I've made here will always stay close to my heart. Thank you. Of the day carries with it not merely a formality of a ceremonial conclusion, but the weight of vision, experience, and institutional wisdom. It is therefore my privilege to invite Mr. Umar Ismail Khan, Sir, Honorable Chairman, Al-Amin Education Society, to deliver the presidential remarks. Education Day of Al-Amin Education Society. I wish all the best in life, great success, prosperity, happiness with good health. This institution was started by my late father, Dr. Mumtaz Ahmad Khan, in the year 1966. It's been 60 years since now, in my grandfather's house in Khalasi Palia, in a bungalow. And by God's grace, it has grown now. We have more than 150 institutions all over, schools, colleges, engineering colleges, medical colleges, etc. And so first of all, today we have to remember the sacrifices of the founder, Dr. Mumtaz Ahmad Khan, who put his entire life behind this movement, along with his team of philanthropists, social workers, who kept helping him throughout the journey. And this is how we got this campus. And those who have been here for many years will know that this campus was not like this as it is today. I studied here in 1988 to 90, I studied in this campus. At that time, there's rain, there was a lot of puddles here. To get to the classroom would be difficult. We had one small room, and the quality of students and everything was totally different. Now it is, with great efforts, this has come to this position. And there's a philanthropic nature of this institution. Many students, many institutions that provide the same education for the same courses are charging double, 3 times the fees we are charging. And we always stick to that. We always worry if we raise our fees, how will the poor people study? How will the lower middle class study? So we always keep that philanthropic nature. And also along with the society, when it was formed 60 years back, at the same time they started a scholarship committee also. By knowing that even the poor students also have to get this opportunity. So most of you all here are from middle class people, middle class background and poor people. And you all are studying here. Inshallah, you have got the best education, best quality education. You see the person who spoke before me, Mr. Junaid, how many papers he has cracked. Then earlier to the last year, we got a rank. One student got a rank from the Bangalore University. And even one of our staff here is a rank holder who got first rank in sociology. So, this kind of atmosphere where there is humility and also good education, we have provided you in Al-Amin, along with an Islamic atmosphere. See, now the world is worrying about not about anything else, but the nature of people, the character of students. That is what's worrying now. Many parents pay a high amount and get into higher institutions, higher expensive institutions, but then the atmosphere there is not conducive to an Islamic way of life, and that affects the students. Those students who study in Al-Amin College, who read regular namaz here in this campus, who read regular prayers 5 times a day, who get the opportunity to read Friday prayers, life on earth. So please take care, especially of your mother and your father. Be good to them. In the Quran elsewhere, Allah also mentions about one ni'mat he had given to one of the banda. He said, I gave him 2 ni'mats. One, I gave him children, and the second ni'mat was the children were in front of his eyes. They stayed, they've been close to him. So also remember, there is risk everywhere in the world. Wherever your risk is, you will go. But it is always better to try to stay close to your parents. They need you, they need yourself, they need your support when you are old. So there is a lot of growth in India. There is good salaries here, good income here. To try to see if you can't take care of your parents, how much ever you earn, how much ever wealth you build, if you couldn't take care of your parents, what kind of life was that? So try to stay. The 2 ni'mat is that the parents had you, that is one ni'mat for them. If you stay close to them, it is the second ni'mat for them. So I know that I have an old mother. My presence makes a lot of difference. When I'm there, she's looked after well. People respect her, and things get solved easily because of my presence. If I was not there, if I had gone to some foreign country and she was here alone here, things would have been different. So please try to take care of your parents and try to stay in front of their eyes.
As Bilal said, hard work, yes, keep work very hard, and honesty is still the best policy, and always be truthful. Honesty, truthful, always try to say the truth and work very hard. Physical health also is very important. You will see now many youngsters are passing away, 45, 50, many people are getting heart attack and dying, etc. Take good care of your health. Exercise regularly, daily half an hour of exercise. Avoid unnecessary food, unhealthy food, and take good care of your health. This is what we do every morning. We take half an hour walk, and then only we start the day. So please take care of your health. Once you are in good health, you become an asset to your family. If you have good health, from top to bottom, if you are in good health, you are an asset to the family. If you develop some kidney disease, liver disease, heart, lung disease, then you become a liability to the family. You will be surprised at how many people have died. I die regularly. I sit in the scholarship trust. I get so many people, sir, my father died. Ladies come, my husband died. How many people, how many youngsters? We don't see so many, we don't get to see those numbers, but when you sit in the scholarship office, I know how many orphans I am supporting. So please take care of your health. Morning hours are very important. Those who get up in the morning, those who get up before sunrise will dominate those who get up after sunrise. So please get up early before sunrise, regular namaz, and tahajjud if possible, and a bit of Quran. When every house, only if you read regularly Quran in your house, there is barakat in your house. For those of you who are not yet earning, if you want to contribute to the barakat in your house, to your family's income, to your parents' income, please read Quran every morning at Fajr time. Something about Salihin I will tell you. When all of us, when we read Atahiyatu, we read Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. And also when you read Surah Fatiha, you read Annamta, Allah include us in the Annam. Who are the Annam? In the Quran again it says the Shuhada, Salihin, Siddiqeen and Anbiya. So we can't be among the Anbiya, we can't be among the Siddiqeen. And only two ways to get to the Jannat is Salihin and Shuhada. Okay, Shuhada we don't know how we are going to die. So what is left is Salihin. To get into the Salihin, once you get into Salihin, every prayer that you make, all of us make prayer here, the whole world makes prayer. The Imam of Makkah, Imam of Medina, the lakhs of people who are doing Umrah, the lakhs of people who are in Medina, all of them are making the prayer. They're all saying Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. And they're praying for the Salihin. So once you get into the Salihin, you don't need to ask anybody, दुआ में याद रखो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सब जने तुम दुआ में याद रखें, पर करोड़ों मुसलमान तुम्हें दुआ याद रखें, सालिहीन में शामिल हुए तो सालिहीन में शामिल होने का एक ही तरीका, हर दिन तहज्जुद को उठना पाबंदी से. जो लोग तहज्जुद को पाबंदी से उठती, अल्लाह उनको सालिहीन में शामिल करती. सालिहीन में एक बार शामिल हो गए तो कौन सी भी चीज़ की फिक्र नहीं, पूरी करोड़ों रुपये हर वक्त 5 वक्त तुम्हारे वास्ते दुआ करती. तो तहज्जुद की पाबंदी करो. अब बड़े हो गए तो मिलोगा, छोटे नहीं 21 साल के बड़े हो गए, ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू गेट अप फॉर तहज्जुद रेगुलरली. हमेशा जो है आजिज रहना, बी हम्बल ऑलवेज. अल्लाह लव्स दोज हु आर हम्बल, सो ऑलवेज बी हम्बल. Remember your origins, from where you were born, how you were born, what is your origin. Always remember, be humble. We have to go back to Allah one day. We have to die, be buried in sand, again rot, our bodies will rot, our bones will rot, we'll go back to sand, to how we are created. So there's nothing to be humble about, all right? So arrogant about. So always be humble. So again, mashallah, Junaid and Madiha, very nice of your speech, spoke very well. I'm very happy to hear achievements. And all of you all, I wish you all the best. Do well in life. May Allah bless you all. Allah Hafiz. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, सबको खैरियत रहेंगे सभी. तो हमें अलमीन में पिछले 3 साल से पढ़े, यहाँ का एक्सपीरियंस हमने बहुत अच्छा रहा. पढ़ाई के साथ टीचर्स जो भी हैं हमारे बहुत सपोर्ट करे हमने, चाहे यहाँ कॉलेज में रंदे या फिर घर पर रंदे. क्या तो भी डाउट रहा व्हाट्सएप में मैसेज डालेंगे तो भी टीचर राता को भी रिप्लाई करती. और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था हमारे साथ, खासकर हमारे प्रिंसिपल सर जो हमने बहुत सपोर्ट भी करे साथ में कि बच्चे अच्छा पढ़ेंगे. सुबह ही हमें अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है, दूर से आ रहा है, नाश्ता नहीं कराया तो इधर ही नाश्ते का भी इंतजाम करके रखे थे हमारे प्रिंसिपल सर ने. तो आज 3 साल इधर पढ़ने के बाद अभी छोड़ के जाना है तो थोड़ा दुख तो हो ही रहा है, बट इसके साथ फर्दर स्टडीज भी करेंगे करके उसकी एक अलग खुशी है हमना. इंशाअल्लाह जो भी अभी जमने वाले हैं या फ्यूचर में इधर पढ़ने वाले हैं, मेरी तरफ से ये सजेशन रहता है कि बहुत अच्छी कॉलेज है,
सामने मस्जिद भी है, आपको नमाज को भी टाइम को नमाज भी पढ़ सकती हैं। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि क्लास के बच्चे जाको नमाज नहीं पढ़ना, ऐसा कौन सा भी ऑब्जेक्शन इधर पे नहीं है। जी, क्या रिजल्ट्स वगैरह कैसे रहे? रिजल्ट वगैरह सही है, अच्छे आ गई, जिसमें हम टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करे कि हम ना क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर्स के थे जिससे हमें रेफरेंस मिल पाए वो भी लाखों दिए हमने, और उससे हमें रेफरेंस लेकर पढ़ को एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से गए और रिजल्ट्स विदिन 2 मंथ्स के अंदर ही हमारा रिजल्ट्स भी आ जाते थे। अभी जो 6 सेम का देखो ही उसका वेट है हमने, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद हमें फर्दर जो लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जैसा कि मैं अलमीन में ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह जो वाले अलमीन का बहुत बेहतरीन है, जो मैनेजमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ के लिए सपोर्ट है इधर। फ्रॉम मिडिल क्लास टू पुअर पीपल लाइक everything where we have every facility माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है अलमीन कॉलेज, और इंशाअल्लाह जॉइन करो एडमिशंस अलमीन में आपको। तो क्या बनना चाह रहे हैं आप इंशाअल्लाह फ्यूचर में लॉयर, तो इंशाअल्लाह इधर ही अलमीन में ही एडमिशन, अलमीन में ही लॉ कॉलेज है इंशाअल्लाह। तो अच्छा, वेरी सपोर्टिव टीचर्स है इधर, मैनेजमेंट क्विक मैनेजमेंट बेहतरीन है, कैंपस भी अच्छा है और इधर मस्जिद भी है, नमाज के लिए कोई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फीस वगैरह कैसा है? फीस के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है फीस माशाल्लाह, बहुत दूसरे कॉलेजेस को देखे इधर बेहतरीन फीस है। तो फीस में और स्कॉलरशिप भी मिलता है आपको सबको भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। मेरा नाम रतीम है, मैं अलमीन की स्टूडेंट हूँ, बीएससी कंप्लीट किया है, ग्रेजुएट हूँ। ये कॉलेज बहुत अच्छी है और यहाँ पर फीस बहुत ही कम है, स्टूडेंट्स अच्छे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत अफोर्डेबल है और एजुकेशन बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत प्यारे हैं, उन्हें जो पढ़ाते हैं अच्छे से समझ आता है। रिजल्ट्स कैसे हैं आपके? रिजल्ट्स मैंने सेंटम स्कोर किया है, हाँ। 2 सब्जेक्ट्स में सेंटम स्कोर किया है और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। माशाल्लाह। कौन से सब्जेक्ट में सेंटम स्कोर हुआ है? माइक्रो और जोलॉजी में, दोनों में सेंटम मिला है। गुड। और मैं एक 1 ईयर वुमेन सेक्रेटरी, स्टूडेंट काउंसिल में वुमेन सेक्रेटरी सर्व की, वुमेन सेक्रेटरी थी। इंशाल्लाह ये कॉलेज में मास्टर्स भी कंप्लीट कर दूँ। अभी नेक्स्ट मास्टर का इरादा है? हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आलिया हुरैन। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। So how was your experience here? It was nice। हाँ। 3 साल कैसे गुजर गए मालूम नहीं। 3rd ईयर में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बना, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया, मजा आया। अभी क्या बताऊँ, बहुत स्पोर्ट्स के लिए और कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर? बहुत सारे। हाँ जी, बताओ। NSS है, NCC है, अगर आपको कुछ सिविल सर्विस ऐसे कुछ मतलब करना है तो NCC ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते तो NSS। तो हमारे कॉलेज में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिससे आप मतलब बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत फ्रेंडली टीचर्स हैं यहाँ के। आपको मतलब क्या बताऊँ, जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आया था मेरा मतलब कोई दोस्त नहीं था। मेरी बहन है ये कजन। कहाँ से हैं आप? हम लोग बैंगलोर से हैं। तो मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब कॉलेज में हर डिपार्टमेंट में हर मतलब क्लास में सारे दो मतलब सब दोस्त हैं मेरे यहाँ पे, जूनियर से लेकर सीनियर्स तक। गुड, बहुत खुशी महसूस हो रही है। yes. हम दोनों क्लासमेट्स हैं, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। अभी हमारा एग्जाम खत्म हुआ है लास्ट वीक, तो हम अभी हमारी ग्रेजुएशन एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। तो सफर कैसा रहा यहाँ पर? 3 साल कैसे गुजरे? मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा चुल बोली, बहुत ज्यादा बोलती थी। मेरी क्लास में कोई भी बंदा मुझे नहीं पसंद है, जो पीछे खड़ा है वो। और ये इनको लगा कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन इससे दोस्ती करेंगे तो ये बहुत ज्यादा पकाएगी। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि इनको लाइक अच्छा लगने लगा मेरे साथ। सबसे ज्यादा दोस्ती मतलब हमारी दोस्ती कैसे हुई, जब हम फर्स्ट नवंबर मतलब 11 नवंबर पे हमारा तब से हमारी दोस्ती बहुत गई और इन दोस्तों के साथ इतना मजा आया कि लाइक अब हेलो मुझे नहीं पता पढ़ाई वगैरह कैसे रही? फ्रेंडशिप तो अच्छी रही, पढ़ाई अच्छी थी यहाँ, लेकिन जब से धनुष सर आया और भी ज्यादा मजा आने लगा। वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते थे, लेकिन आप ग्रेजुएट बनने जा रही हैं? So I'm very thankful
I'm so congratulations to me. Finally, after 3 years, I graduated. It's all because of this college and my mother, because my mom has sacrificed many things to complete my graduation. And I wanted to thank my college principals, teachers, and our department teachers also. So मुझे क्या बोलना है तो पहले से बहुत लोग बोलते थे कि अलग बट आज मैं बोलती हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव जॉइन्ड दिस कॉलेज। लड़कियों के लिए कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर? माशाल्लाह हमारी हमें कई सदस्यों के साथ हमें बिहेव करती है ऑब्वियसली उनको भी साथ में साथ बिहेव करती है। इट्स अपॉन अस हमें कैसे हटेंगे उनके हमारे से वैसे है। हाँ तो क्या कहना है, स्कॉलरशिप वगैरह मिली कुछ आपको? Yes, Alhamdulillah. To be very honest, just because of this scholarship, I have completed my 3 years. And इसमें मुझे जरी भी शर्म की बात नहीं है, because मेरी मेहनत की वजह पढ़े लिए सो, and finally I have graduated. माँ को खुशी होगी कि बेटा ग्रेजुएट बना है, पहला ग्रेजुएट है बेटे के लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। आपकी फैमिली में पहले ग्रेजुएट हैं या इससे पहले? नहीं मेरा बेटा पहला ग्रेजुएट। पहले हाँ जी। मुझे बहुत खुशी है मेरा अब्बा बेटा अब्बा क्या करते हैं? इनके अब्बा क्या काम? टीचर है। हाँ टीचर जी। तस्लीम है, आज मैं आलमीन आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स से एमकॉम फिनिश करके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट बन के जा रही हूँ। ये 2 साल का सफ़र मेरे लिए बहुत अच्छा था। दोस्त नए मिले, टीचर्स भी अच्छे थे, सेक्रेटरी भी थे और प्रिंसिपल भी अच्छे थे। सब चीज़ अच्छी थी और हमने भी बहुत कुछ सीखा है, कॉन्फिडेंस सीखा, मोटिवेशन सीखा है और बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट्स भी लेके हैं हम। इसलिए एजुकेशन सिर्फ आलमीन कॉलेज में एजुकेशन के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए भी फायदेमंद है। जैसे कि इंडोर नहीं आउटडोर भी चलता है क्लास के। बीकॉम कहाँ पर किया आप? मैंने बीकॉम मेरी महारानी कॉलेज में किया है, बट एमकॉम आलमीन कॉलेज में किया। तो एमकॉम के लिए जो है आलमीन को क्यों पसंद किया आपने? बिकॉज देखो सर, ऐसे मुस्लिम हमारे लिए दो भी अच्छा है। मुस्लिम के लिए मतलब हमारे कायदे कानून में रह के हम आराम से एमकॉम भी कर सकते हैं और हमारे मुस्लिम रिलीजन तो कैसा रहा फैकल्टीज वगैरह, पढ़ाई का? बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड भी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। तमाम सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स थे? हाँ, सब सब्जेक्ट के लिए टीचर्स थे। सिर्फ सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, बहुत सारी जनरल नॉलेज भी थी, पर्सनल डेवलपमेंट भी था, बहुत सारी कोर्सेज भी हमने सीखे। तो आइंदा क्या मंसूबा है आपका? अब आइंदा क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह करियर बनाएंगे, करेंगे पीएचडी का कोई? हाँ, पीएचडी के साथ साथ करियर इंशाल्लाह। आप दुआ करें। आपका कहाँ से आप आए? तो बहुत अच्छा था। मेरा नाम सैयद उमर है, बेंगलुरु का ही हूँ। हाँ तो बहुत काफ़ी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। आलमीन में सब सपोर्टिव थे, फैकल्टी मेंबर्स सभी, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। इंशाल्लाह इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कितने साल आपने पढ़ाई की? 3 साल पढ़ाई की। तो अभी आइंदा का क्या कदम रहेगा? इंशाल्लाह डिसीजन लेना है। हाँ रिजल्ट्स वगैरह कैसे रहे आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह के? हाँ तो कोई मुश्किलात परेशानी यहाँ पर? नहीं, वैसा क्या कोई सजेशन यहाँ पर आप देना चाह रहे हैं? कोई मशवरा आप देना चाह रहे हैं? अच्छी है, कॉलेज अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सपोर्टिव है फैकल्टी मेंबर सब। हाँ फीस वगैरह कैसा है? काफी है एकदम ये है। हाँ क्या भी ज्यादा ये नहीं है। Al-Amin College is very, a very good college to study for academically or teacher-wise, studies-wise, and everything. Even cultural activities, sports. We students, teachers, and management encourage us in all the activities. We are very happy to get graduated, completing 5 years in Al-Amin, and I'm very proud to be an Al-Aminian here. Thank you. So what? I've completed my masters in microbiology. I've completed my BSc from the same college. And also I've completed my PU from the same college. This is my 7th year in this college. I'm good. really very Long journey, 7 years you have in the Al-Amin campus. Yeah, it's very pleasure to stay here. So how for ladies this campus is? This campus for ladies is very, very supportive. We are very happy to stay here. We feel protected, and teachers here are always helping us in every aspect. Though whether it is in education or in our life, they always help us. So what is your suggestions to youth who want to pursue degree? I suggest all the youth to go choose a path or the career in which they are interested in, to stay motivated, to always focus on their career, and also do not feel demotivated or do not fear of failure in all of those things. Don't be that, and I motivate all the youth to be very confident and keep trying.
Are you first master graduate in your family? Yes, I am the first master graduate in my family. I am the first one to hold the double degree in my family. I am very proud of it. I request all the master degree students to join. बड़ी खुशी हो रही है आपको? हाँ. Actually, this is Mohammad Adnan from Tamil Nadu. Now I am here Al-Amin Arts Science and College as a final exam degree. टीचर्स भी अच्छे अच्छा एजुकेशन है। हाँ. अच्छा है। तो कहाँ से आप आए थे? मैं बेंगलुरु वाला हूँ। बेंगलोर. हाँ हाँ. तो क्या भी प्रॉब्लम यहाँ पर मुश्किलात कुछ? हाँ. दोस्त भी बने, अच्छे मेमोरीज हुआ कॉलेज में। हाँ. अच्छा फ्रेंड्स है हुआ, अच्छा ये हुआ। अच्छा रिजल्ट्स कैसा रहा? रिजल्ट भी अच्छा था। हाँ. अच्छा टीचर भी सपोर्टिंग है, पूरे सपोर्टिंग है। तो आइंदा क्या करेंगे? जॉब करेंगे? जॉब करेंगे नहीं, हायर स्टडीज के लिए। हाँ. हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडी. And abhi I have completed my 5 years of degree, double degree here. I have completed MCOM and my degree also. So it's been a very great journey. Till now, Al-Amin has given a lot of stuff, education and good teachers also. And you should also come and try. You should make admissions for the children. And there are also placements recently, and they're so they are giving a good education and they are good teachers. That's what I recommend for all the students who are there outside who are completing the PUC to come and join Al-Amin College. Thank you so much. Have you got placement? Yeah, I have got placement. Where which company? In Tata company. से आप आए? डायरी सर्कल के पास से यहाँ का सब अच्छा है, फैकल्टीज भी अच्छे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ सब भी अच्छे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था, 3 इयर्स में अच्छा। रिजल्ट्स वगैरह अभी तक नहीं आया। 6 सेमेस्टर का रिजल्ट, पिछले सेम के रिजल्ट्स अच्छे थे, सब में भी पास। और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कैंपस टीचिंग क्या करते हैं आपके अब्बा अम्मी वगैरह? हमारे को सेल्स, कपड़े सेल्स करते थे हमारे अम्मी हाउस। पहले ग्रेजुएट हैं आप अपनी फैमिली में? जी बताइए। हाँ. फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कॉलेज अच्छी है, जगह अच्छी है, खाली पढ़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं। तो आज एक शानदार प्रोग्राम हो रहा है अल-अमीन कैंपस में, खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आज के प्रोग्राम की क्या तफसीलात? अस्सलाम वालेकुम। आज अल-अमीन डिग्री कॉलेज, अल-अमीन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज का 58th ग्रेजुएशन डे है। तकरीबन 200 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं जो बीकॉम, बीए, बीएससी, एमकॉम, एमएससी से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए यानी 50th है, तो अब तक 58 बैचेस चले गए हैं, एक नई बैच जारी है। बच्चे जो है हमारे बहुत रेडी हैं, तैयार हैं फेस करने के लिए। तो ये हमारा कोशिश है कि अच्छा ग्रेजुएशन डे हो तो बच्चों की हमें एक यादगार बने। बड़ी तादाद में नौजवान ग्रेजुएट हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज एम्प्लॉयमेंट का है, जॉब अपॉर्चुनिटीज का है। तो जी हमारे बच्चों को जो है अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट भी कराते हैं और एड ऑन कोर्सेज भी कराते हैं, ताकि बीकॉम के बच्चे कुछ सीए का सीख लें और डेटा साइंस वगैरह, कंप्यूटर साइंस के बच्चे डेटा साइंस वगैरह सीख लें। तो उनको जो है उनकी स्किल एम्पावरमेंट करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, ताकि बच्चे और कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। ऐसी कोशिश है। इस तरीके से प्लेसमेंट में भी असिस्ट होती है। अब जो बीकॉम के बच्चे पढ़े हैं, डिग्री खत्म हो रही है, वो इधर अल-अमीन में एमबीए के लिए आते हैं, या एमएससी जो कंप्यूटर साइंस बच्चे पढ़े हैं वो एमएससी के लिए आते हैं। तो ऐसा बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। और एक ड्रीम ब्रिक प्रोग्राम भी चला रहे हैं, ड्रीम ब्रिक इनिशिएटिव, ताकि बच्चों को जो है एक पहले से ही बड़ी सोच, यानी एक पॉजिटिव सोच का जो है मौका दिया जाए। तो हमारे गवर्नमेंट के आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड जजेस, आईआरएस, आईएफएस, ये गवर्नमेंट के जो भी बड़े ऑफिसर हैं वो लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ हमारे कैंपस में आते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ताकि वो बड़ा सोचें, बड़ा करें, आईएएस बने और आईपीएस बने। ये हमारी कोशिश है, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि ये बच्चे जो है एजुकेशन में हो। Come this side. Go ahead. Khadijatul Kubra from BSc. Very known person, Mohammad Junaid from BCom. Best out. Now we have the next category of awards for best outgoing students.
Okay. Next we have UG department students. Suhaira Fatima from BA. Safinas from BCom. Sheikh Zubair Ahmad from BSc Bioscience. Can we have Sheikh Zubair Ahmad here? Saifullah Khalid from BSc Physical Science. Misbah Taj is here. Saifullah Khalid from BSc Physical Science. Misbah Taj prizes for NCC Best NCC Cadet Phoning Kalenta from BA. Percentile scorers 100 on 100 in many subjects. We have Mohammad Junaid from income tax. Mohammad Junaid from BCom in financial management. Abdul Khadir Audha. Next, Misbah Taj in income tax. Next, we have Misbah Taj, Sports Center in income tax. Tasfiya Banu, Sadia Mehek. Audience, can you please applaud them? Next, Safinas. Asia Fatima from 3rd semester student. Asia Fatima. Can we have Asia Fatima here? Okay. These are the next we have students from BSc. Next we have Sumaira Sadaf. Sumaira first. Come, Sumaira. Sheikh Zubair Ahmad in 2 subjects, zoology and microbiology. Tasmiya Fatima from BSc. Tasmiya Fatima, we have Tasmiya Fatima here from BSc. Bibi Zainab Taiba. Next, Khadijatul Kubra. Next, Khadijatul Kubra, be ready. Bibi Zainab Taiba in 2 subjects, zoology and microbiology. After Khadija, Azra Fatima. Students, I request them to come near the desk. Tasmiya Tawassu from MSc, Fatima Zainab from MSc, and Tasmiya Fatima Zainab from MSc, Tasmiya Fatima from BSc. Kannada department has recognized 2 students as the best outgoing students and percentile students. We have Rukhsar F from final year BCom and Adiba Fatima from final year BSc. I request them to come near the stage. Rukhsar F from final year BCom and Adiba Fatima from final year BSc. Rukhsar F from final year BCom, Adiba Fatima from final year BSc. Lais and Mohammad Danial. Sheikh Tabriz and Mohammad Danial.
achievements be remarkable, but your character even more so. BCom students, I repeat again, Abdul Tawheed, Abdullah Hamad, Akash G, Amreen, Anwar Raza, Aisha Siddiqa, Faizan. Faculty members, non-teaching staff, dear parents, graduating students, ladies and gentlemen, a very good afternoon to one and all. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of 58th Annual and Graduation Day ceremony of Al-Amin Arts, Science and Commerce College. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to Almighty Allah for blessing us with this wonderful occasion and making today's program a grand success. On behalf of management, principal, staff and students, I extend my sincere gratitude to our guest of honor, Mr. Zubair Anwar, Honorable Secretary, Alumni Education Society, for your constant encouragement and unwavering support towards the growth and excellence of our institution. Our heartfelt thanks to our Honorable Chairman, Mr. Umar Ismail Khan, for presiding over today's function and for his inspiring presidential remarks. Sir, your visionary leadership, guidance, and continuous commitment have been the driving force behind the remarkable progress of our institution. I extend my gratitude to Mr. Bilal Ahmad Khan, co-opted member of Alumni Education Society, for addressing the gathering and motivating our graduating students with his encouraging words. I also extend